हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे सेट 3 दैट कंटेन्स 10 important year wise numericals which are very important to upcoming grade 3 and grade 4 examinations, so keep watching. First question: in the equation x square minus twice x plus 1 equal to 0, the value of x cube minus 1 by x cube is। यहाँ पे फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे x square minus twice x plus 1 equal to 0. So we know that x square minus twice x plus 1 equal to 0 is x minus 1 whole square, therefore x equal to 1. तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पे। सो 1 क्यूब माइनस 1 बाई 1 क्यूब दैट इज 1 minus 1 is 0. So answer option A is correct. Next question: how many cubes of volume 1 centimeter cube each can be cut out from a single cube of volume 1 meter cube? So we have a cube of volume 1 meter cube. 1 meter cube मतलब length is 1 meter, then breadth is also 1 meter and height is also 1 meter. Okay, so we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. 100 centimeter and 1 meter cube is 1 meter into 1 meter into 1 meter, that is 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. So 1 meter cube becomes 10 to the power 6 centimeter. Okay, so how many cubes can be cut? 10 to the power 6 cubes can be cut from a single cube of 1 meter cube. Okay, so answer will be 10 to the power 6, that is option B. Next question: a 10 feet long ladder leaning against a wall touches the wall at a height of 8 feet. Okay, so we have a ladder of length 10 feet, of length 10 feet, then it touches the wall at a height 8 feet. So this is the wall of height 8 feet. By what distance should the ladder be moved to the wall so that its top touches the wall at height 9.6 feet? So ये लेडर है, ये जो ई और डी, ये जो क्या है लेडर है जो पर्टिकुलर ईबी जो वॉल है इसके ऊपर लीन्ड है, इंक्लाइंड है। तो बाय द क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो ईडी लेडर है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे टुवर्ड्स द वॉल। एक्स डिस्टेंस हम लोग टुवर्ड्स द वॉल मूव कराएंगे, जिससे क्या होगा, द वॉल बिकम्स the ladder becomes AC. Okay, the new position of ladder becomes AC. So AC is the new position of ladder. ठीक है, हम लोगों ने कितना डिस्टेंस मूव कराया, x डिस्टेंस. Then we have to find out the x by what distance the ladder. हम लोगों को क्या निकालना है, x डिस्टेंस निकालना है. So सिंपल फॉर्मूला है. So हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, फर्स्ट जो ladder का पोजीशन है, फर्स्ट ladder का पोजीशन क्या होगा, ट्रायंगल BED, ट्रायंगल BED. तो BED में ED जो है वो लेटर है 10 फीट गिवन है, देन BE वॉल है दैट इज 8 फीट गिवन. हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को पास निकालना पड़ेगा BD. क्या निकालना पड़ेगा, BD. ओके, सो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो हम लोगों को BD निकल जाएगा, BD इज 6 फीट. BD क्या आएगा, 6 फीट आ जाएगा. नेक्स्ट BD जो है, अभी हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम लोगों ने कितना डिस्टेंस वो किया, हम लोगों ने लेडर को x डिस्टेंस लेके आए. ठीक है, वही x हम लोग को निकालना है. सो दिस इज द न्यू ट्रायंगल. व्हिच ट्रायंगल, इट इज ABC. क्योंकि लेडर जब x डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या होगा, वॉल का हाइट हो जाएगा 9.6 फीट एंड लेडर का तो जो लेंथ है वो 10 फीट ही रहेगा. और BC जो है, BC क्या होगा, देखिए x डिस्टेंस इसने मूव किया लेडर ने.
So BC becomes 6 minus S because इनिशियली BD हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया था, BD हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, वो 6 था. So BD is 6 and you can see here this is D. BD is 6 and CD that is X. So BC will be 6 minus X. Okay. So BC will be 6 minus X. तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को X निकालना है. तो X निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल अब यूज करेंगे, हम लोग ट्रायंगल अब यूज करेंगे ट्रायंगल ABC. सो ट्रायंगल ABC का क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद x क्या आएगा, x आएगा हम लोग का 3.2 फीट. x क्या आएगा 3.2 फीट. सो इन द ऑप्शन A इज करेक्ट, 3.2 फीट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the average age of ABC is 22 years, then average age of B and C is 25 years. So you have to calculate the age of A after 9 years. Okay. So given average age of ABC is 22 years, therefore total age of ABC will be simply 22 into 3. 3 क्यों है, क्योंकि A B C 3 लोग हैं. So 3 into 22. Therefore answer is 66 years. Similarly average age of BC, BC क्या होगा 25 into 2 that is 50 years. Then present age of A, यहाँ पे क्या है, ABC से अगर हम लोग ABC तो 3 लोग हैं, इसमें से अगर BC 2 लोग माइनस कर देंगे, क्या रहेगा, A रहेगा. तो सिंपली क्या करना है, माइनस करना है. So total age of ABC minus total age of BC, that is 66 minus 50 years equal to 16 years. Okay. So this is the present age of A. So present age of A is 16 years. क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है the age of A after 9 years. Therefore age of A after 9 years will be 16 plus 9, that is 25 years. तो आंसर कौन सा होगा, 25 years is option C. Okay. Next question. If A is to B is equal to 2 is to 3 and B is to C is equal to 4 is to 5, then C is to A is. So we have already given A by B is equal to 2 by 3. This is given and B by C equal to 4 by 5. This is given. तो हम लोग को देखो निकालना क्या है, निकालना है C is to A. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A is to C निकाल देंगे. क्या निकालेंगे, A is to C. कैसे निकालेंगे, A by B is given and B by C is given. B is the common factor. Here B is the common factor. What is the value of B? Value of B is 3 here and here is 4. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो B का जो वैल्यू है 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे. सो B का वैल्यू अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. यहाँ पे अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे B का जो सेकंड वैल्यू है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 into 4 is 8, then 3 into 4 is 12. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, B by C is given. सो B का वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे B का वैल्यू क्या है 3. तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, B का सेकंड वैल्यू जो ये है ये मल्टीप्लाई करेंगे 3. सो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 into 3. So that is 12 by 15. Then we have A by B is equal to 8 by 12 and B by C is equal to 12 by 15. तो अभी क्या करेंगे, A by B into B by C करने से क्या हो जाएगा, B भी कैंसिल हो जाएगा, B भी कैंसिल हो जाएगा. क्या रहेगा, A by C रहेगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या रहेगा 8 by 15. So we have A by C is equal to 8 by 15. Okay. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, C by A. So C by A is it simply 15 by 8. Okay. So option 15 by 8 is D. Option D is correct. Next question. Kamal buys an article 20% less than its printed price and sells it for 20% more than
the printed price, the percentage of gain of selling prices. So Komal buys, Komal ने क्या खरीदा, an article खरीदा for 20% less than. So suppose the price of an article, suppose the price of the article which Komal bought, okay, तो कितना है x, क्या है x. So he buys an article 20% less than its printed price. So 20% less than printed price मतलब कितना है, 100 अगर उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 100 अगर उसका ओरिजिनल प्राइस होगा, ओके, 100 अगर ओरिजिनल प्राइस होगा तो कितने कितने 20% लेस मतलब कितना है, 80 से इसने खरीदा है. सो कॉस्ट प्राइस विल बी 80 डिवाइडेड बाई एक्स, 80% ना, 80 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स. ओके, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा, इट्स ही सेल्स इट फॉर 20% मोर. सो 100 अगर प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120 होगा, क्या होगा, 120 होगा. So here selling price is 120 divided by 100 into x, okay, that is 12 by 10 x. तो हम लोग को क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है. So we know that gain percentage is selling price minus cost price divided by cost price into percent or 100. okay, तो selling price कितना है, selling price is this 12 by 10x minus cost price कितना है, cost price is this 8 by 10x. पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 बाई 10x. सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 50%. सो 50% इज द आंसर, दैट इज गेन ऑन सेलिंग द आर्टिकल. तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन इज बी, 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 10% every year, okay, 10% every year, the present population is 1000. Then after 3 years of the population of the town become, so here r, it is rate of increase, the rate of increase of population is 10%, r is given, okay, r is given. Then present population, that is p, present population is given 1000, okay. Then after 3 years मतलब n given है 3 years. तो क्या निकालना है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन निकालना है. सो सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ओके, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 इंटू 100 टू द पावर n. सो p इज 1000, देन 1 प्लस r इज 10% डिवाइडेड बाई 100 क्यूब. सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये 10 0 और 0 कैंसिल कर देंगे. सो इट इज 11 बाई 10. सो 11 बाई 10 क्यूब. सो क्या होगा, 1000 आएगा नीचे, ऊपर क्या आ गया, 1331. सो 1000 कैंसिल, a is 1331, okay, a is 1331. this is the population of the town would be, so answer is option D. so population after 3 years क्या होगा, 1331. next question, two natural numbers are in the ratio 3 by 5 or 3:5 and their product is 135, okay, the smallest number is, so we have the three numbers 3x, suppose the two numbers are 3x and 5x, okay. So according to the question, the product of two natural numbers, so product of two natural number is, that is 3x and 5x into 5x is equal to 135. so 135. सो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो एक्स स्क्वायर और 3 इंटू 5 हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, क्या होगा, आंसर आएगा 9. सो एक्स स्क्वायर इज 9, सो एक्स विल बी 3. सो नंबर्स आर 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 3 9, देन 5x 5 इंटू 3 दैट इज 15. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट, और स्मॉलर कौन सा है, 9. सो आंसर विल बी 9. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 9. Next question, the diagonals of any square are in the ratio 2:3. okay, diagonals are given. So suppose this is a square, this is a square, suppose a b c d. so this is the diagonal, okay. so diagonal suppose d1, so d1 is the diagonal, okay, d1 is the diagonal.
सो डायगोनल का वैल्यू कितना है, डायगोनल का वैल्यू है ट्वाइस एक्स, सपोज इट इज ट्वाइस एक्स एंड सेकेंड स्क्वायर जो है, सपोज दिस इज ए सेकेंड स्क्वायर ई एफ जी एच, उसका डायगोनल कितना है D2, कितना है D2, तो D2 इज से 3x से. So according to the question, diagonal D1, the diagonal of any two squares are in the ratio, that is diagonal D1 by D2 are in the ratio twice x by 3x. This is given. Okay, the area of the square. So area of the square क्या होगा, very simple question. So suppose A is the area of the first square and A2 is the area of second square. So this will be half into, so twice x square divided by half into 3x square. Okay, so half cancel, so answer would be 4/9. ऐसा क्या होगा 4/9. तो here ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 4/9. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 men can complete a task in 15 days. So 6 men can complete a task in 15 days. After 10 days, okay, after 10 days 4 more men join, then the number of days required to complete the remaining work. हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज निकालना है टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. सो इसको सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो सॉल्व करेंगे, लेट x be the unit, x be the unit of work per man. Okay, x be the unit of work per man. Therefore total work is equal to, तो 6 men can complete a task in 15 days. So total work कितना होगा, 6 into 15, that is 90 unit of work. Okay, 90 unit of work. After 10 days, after 10 days, after 10 days क्या होगा, 10 डेज के बाद 6 मैन कितना यूनिट वर्क करेगा. सो 10 डेज के बाद 6 मैन इंटू 10, दैट इज 60 यूनिट ऑफ वर्क करेगा. ओके, इन 15 डेज 6 मैन हैज वर्क 90 यूनिट ऑफ वर्क. सो इन 10 डेज 6 मैन विल वर्क 60 यूनिट ऑफ वर्क. ओके, सो रिमेनिंग यूनिट कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, remaining 90 minus 60 unit of work, that is 30. So 30 unit of work is remaining. Okay, so after 10 days 4 more men join. पहले कितना था, पहले था 6 men, कितना था पहले 6 men था. आफ्टर 10 डेज कितना आया, 4 men join, तो टोटल कितना हुआ 10 men. 10 वर्कर है हम लोग के पास, तो निकालना क्या है, द नंबर ऑफ डेज निकालना है टू कंप्लीट द टास्क. ओके, सो फॉर बाय सो मोर डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क क्या होगा, बाय 10 men. कितना होगा, 10 होगा ना. हम लोग को रिमेनिंग जो वर्क है कितना कितना लोग है अभी खत्म, वो जो कंप्लीट करेगा 10 men जो है वो कंप्लीट करेगा. सो मोर डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क बाय 10 men, क्या होगा, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 30 यूनिट ऑफ वर्क. सो रिमेनिंग इज 30 यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय हाउ मेनी वर्कर्स, 10 वर्कर्स और 10 men. आंसर क्या आएगा, 3 day. So here option will be B. So in 3 days the remaining work will be completed by 10 men. Okay,
So this is the last question of the video. In the next video, I will discuss set 4. Till then, keep watching competitive classes.